गुड मॉर्निंग एवरीवन वेलकम टू MatSciOdia मु तमनकर संबित सर पिले तमनक स्वागत करूची आज गोटे नूतन क्लास आज क्लास रे आमे माने डिस्कशन करिया जाउछंती कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू ओके। तो ये कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू कोन कोन एमानकर कान से सब दिन ऊपर आमे माने डिस्कशन करिबा एवं मु आशा करू तम माने किछि इंपोर्टेंट पॉइंट्स पाइबो तम मानकर एग्जाम रिगार्डेड एवं ताहा सहित तुम मैंने भिडियो को प्रथम शेष जाए देख बहुत किसी इंटरेस्टिंग जिन आधार अच्छी आशा कर क्लास बहुत भल लगे तुम मैंने एंजॉय कर। तो ठीक अच्छे बिना कौन डेरी नक आम मैंने स्टार्ट करवा आज क्लास टी ओके। तो आमरा कौन देखिया पिले आज क्लास ना कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यूज ओके। तो ये कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू कौन जानिबा फास्ट। अच्छा तो से कौन कहूँ ना इट कंसिस्ट of many layer of cell है एथर बहुत सारा सेल रो बहुत सारा लेयर तुम माने देखिबा को पाइबो। अच्छा आर जदि टाइप्स हमें देखिबा तार ए जो कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू रो तार जदि हमें टाइप्स देखिबा ताले ये तमरो पिले दी प्रकार हला द कंपाउंड दी प्रकार रो पिले दैट इज कोन कोन गोटिए होउची तमरो स्ट्रैटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू आ गोटेटी तमरो होउची पिले कोन दैट इज ट्रांजिशनल compound epithelial tissue hello stratified compound epithelial tissue विषय आम लिखा कौन है इट लोअर मोस्ट लेयर it lower most layer is called जर्मिनेटिव लेयर बोली हमें कही था कौन कही था germinative layer. Its lowermost layer is called germinative layer, which continuously divides. जे कि सब बड़े हमरो divide करूथिबो which continuously divide to replace the cell in the upper region and then the cell present in the
present in the uppermost layer, most layer बुझी पाइल say due to frictions। से कहया कथा कौन माने आर जो लोअर मोस्ट लेयर टा जो रही ताको हमें जर्मिनेटिव लेयर बोली कहि थाउ जोटा कि कंटीन्यूअसली बारंबार तमरो डिवाइड करूथाय हैला कि जे कि तमरो सेल अपर रीजन टा को रिप्लेस करिथिबो देन द सेल प्रेजेंट इन द अपर मोस्ट लेयर से ड्यू टू द फ्रिक्शंस त मतलब कोन अपर लेयर टा को सब बेले ये मेंटेन करिकि रखुथिबो बुझी परछ तो सब बेले मेंटेन करिकि रखुथिबो आ ये तमरो पिले दी प्रकार it can be divided into two types, that is कौन गोटे है तुम केराटिनाइज स्ट्रैटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू बुझी पाइल केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू अच्छा तो विषय कौन कहूँ ना ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ ड्यूरिंग the growth of the cytoplasms of the cells are replaced by keratin protein बुझिलो कोन तक हमें कहीं केराटिनाइज स्ट्रैटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू बोली कहउछंती ना आर जो ग्रोथ आर जो साइटोप्लाज्म्स रो ग्रोथ होउची माने ए जो टिश्यू रो जो सेल गुडिका तेरा सबु जंग कहउथरे ना केराटिन प्रोटीन द्वारा एटा होउची अच्छा आउ कोन the nucleus is also destroyed destroyed so the cell in uppermost layer become dead जेहेतु तार न्यूक्लियस ता डीप माने कोन डिस्ट्रॉय हे जाउ सेते पे आर अपर मोस्ट लेयर ता डेड ना सेड लिखितला मन पडुछ सेड माने कोन तोर माने मोल्ला भलिया बुझी बोझी त become dead and shade off due to frictions झड़ी जाए due to frictions ये तो हमर कोड देखा जाए पिले एपिडर्मिस ऑफ द स्किन देखो आरा कयार कथा तमे माने देखिबो शीत दिने तमे दी हाथ को तमे माने एमि छंदी घसीबो हला खरा दियरे तमे देखि ततर छोट छोट धूली भलिया कोन होउतबो ना दिनसा झरी पडिला भलिया हैला कि तो सेटा ही होउची एक्चुअली तमरो कोन ना केराटिनाइज स्ट्रैटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू हैला जेटा हम हाथ फाथ घसीले किबा कोनोसी गोटे प्रकार सेटा कोन हेताय ना झड़ी जाइथाय बुझी परछ तो कोन हेताय ना झड़ी जाइथाय बुझी पाइले समस्ते कहबार कथा कोन हैला झड़ी जाइथाय अच्छा ओके देन तापर आसला कोन हां ए माने कोन तमर एटा हला तमर पिले केराटिनाइज स्ट्रैटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यूज अच्छा तो यदि मन को डायग्राम तमे माने देखिबो किछि ए भलिया देखिया को एमती हेतिबे ए भलिया किछि ए टाइप रो तो माने देखिबो छोट छोट स्क्वायर भलिया एमती तो माने देखिया पाइबो
पहाड़ भाया देखाऊनी एमती एटा केराटिन लेयर कौन केराटिन लेयर एगुड़ी कौन थे एम समस्त स्क्वामस सेल स्क्वामस सेल है। अच्छा एगुड़ा सब कौन सब कलम भाया से कल्यूमनार कल्यूमनार सेल बुझल आटा तुम पे कौन बेसमेंट मेम्ब्रेन बेसमेंट मेम्ब्रेन ने ऊपर को रही केराटिनाइज स्ट्रैटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यूज बुझी पाइल समस्ते। अच्छा देन तापर नेक्स्ट आसला कोन पिले नेक्स्ट हैला नॉन केराटिनाइज स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यूज। तो ये नॉन केराटिनॉइड स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू कोन देखिया ता विषय कहा को हमें कहबा हियर द सेल्स आर फाउंड here the cells are found in live conditions because keratin protein is not deposited बुझी पाइल the cells are found in live condition because keratin protein is not deposited माने एठी keratin protein देख keratin protein हम बॉडी दे रे कोन करू डेड जिंस को तयारी करू नख बुझी पाइल चुट्टी ए सब जिंस कोन केराटिन देता तयारी से आसुची को से स्किन दियरु सिना से स्किन नो ऊपर लेयर धीरे सिना केराटिन टा डिपोजिट होउची बोली सेटा हम नख तयारी करूची किबा चुट्टी तयारी करूची ए प्रकार जिंस होउची सेम ए जिंस ही तो जेहेतु एठी तमरा केराटिन रो डिपोजिशन होउनी सेति में यार ऊपर जो सेल्स गुडी को रहिता है सेउरा सब जंग तम लाइव देखिबा को पाइबो। देन द सेल in the uppermost layer become soft no that is showed of is hardening due to frictions एग्जांपल कौन कौन आसीबो बुक्कल कैविटी टंग pharynx oesophagus and vagina ए सब जगह तुम मैंने देखिया को पाइबो बुझिलो। अच्छा तेबे सेटा को हमें डायग्राम करिवो अरे सेम जिंस एटी जा आइतले सेया केवल खाली से ऊपर केराटिन लेयर ता तुम मैंने देखिया को पाइबो नै एटा नथिबो नला आ जहा थिला सब जंग सेया सेई स्क्वामस सेल अछि ता तळ को सेई कॉलमनार सेल्स अछि सेई बेसमेंट मेम्ब्रेन ए जिंस ही रहइबो सब जिंस अछि केवल खाली पिले एटा ही नथिबो
सतरे नॉन केराटिनाइज ए केराटिन लेयर ता तमे माने सेठी देखिबाकू पाइबो नाही बुझी पाइला समस्ते। अच्छा देन तापर आसला कोन पिले ना ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यूज कोन आसला ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू ट्रांजिशनल कंपाउंड ट्रांजिशनल कंपाउंड epithelial tissues एटा कोन पुनी the cells of the epithelial tissue the cells of the epithelial tissue are arranged in 3 to 1 layer माने तीनटारू गोटिए रु तीनटा लेयर पर्यंत तार लेयर तमे माने देखिबाकू पाइबो ए प्रकार टिश्यू रो आ ए माने इलास्टिक भलिया these are elastic in nature here basement membrane is absent हैला आउ कोन आर लोकेशन कोठी थाए एटा को जगह देखा जायता पिले यूरेटर urinary bladder urethra uterus ए सब जगह तमे माने आपको देखिया को पड़े दैट इज अ ट्रांजिशनल कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू बुझी पले समस्ते एटा कोन पिले ना ट्रांजिशनल कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू सेम जिंस हैला एले ये होची डिफरेंस आर बेसमेंट लेयर नथिबो सब जिंस थिबो ए भलिया बट एटा नथिबो कॉलमना स्पामस ए सब जिंस थिबो बट एपिथेलियल टिश्यू रो बट हला बेसमेंट मेम्ब्रेन तमे माने आको देखिया को पाइबो नाही बुझी पाइलो। तो नेक्स्ट क्लास रे आमे माने डिस्कशंस करिया कोन पिले कनेक्टिव टिश्यू ऊपर कहा ऊपर डिस्कशन करिया कनेक्टिव टिश्यू बुझिला समझते क्या पर डिस्कशन करिया कनेक्टिव टिश्यूज तो ठीक अछि पिले नेक्स्ट क्लास रे देखा हवा म आशा करछु तम मानको आज क्लास टी बहुत भल लागिथिबो एवं तमे माने क्लास टी को एन्जॉय करथिबो तो नेक्स्ट क्लास रे देखा हवा आ उठे नुवा टॉपिक ऊपर डिस्कशंस करिवा से पंद पई समस्त को धन्यवाद समस्त भल रे रुवा आ समस्त को बेस्ट ऑफ लक तम मानकर एग्जाम प्रिपरेशंस पई थैंक यू पिले थैंक यू सो मच।